गुड आफ्टरनून एवरीवन मु सिसिर सर आज पॉलिटी क्लास को आपण समस्त स्वागत जनाऊँ। जस्मिन आरती पूजा बबिता मिकी वेलकम टू द क्लास। आज टॉपिक होची डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पिला माने आगरी जेमति कहितली प्रत्येक क्लास रे किछि ना किछि नुवा टॉपिक नेकी आसबा, किछि थ्योरी किछि एमसीक्यू। ओके सेमति आज टॉपिक होची कोन एमसीक्यू। जे भी ऑनलाइन अछो टे जणै दियो। Okay, let's start. First, directive principle of state policy जेमति आगुर कहितली किछि थ्योरी किछि एमसीक्यू। आरती वेलकम टू द क्लास। देखो आज टॉपिक होछि कोन डीपीएसपी। एबे देखिबा डीपीएसपी कोन को पार्ट रे अछि को आर्टिकल कवर करछि कोन यार इंपोर्टेंस हमर कॉन्स्टिट्यूशन को नेकी। ओके देखो डीपीएसपी कोथरे मेंशन कराई छी हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे। फर्स्ट हमर आर्टिकल 4 ओके आर्टिकल 4 सॉरी पार्ट 4 आउ आर्टिकल 36 टू 51 ए दीटा प्राय एग्जाम रे पचारे को पार्ट रे आसी आउ केते की आर्टिकल आसी पार्ट कोटा @ वेलकम टू द क्लास। देखो पार्ट 4 आउ 36 टू 51 अच्छा कोटो ओना हिची याकू देखो हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि ना किछि पार्ट कोन से सोर्स रो हमें आनिछु। ओके ताले देखो सोर्स टा गोटा बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। देखो सीते बेले डीपीएसपी तांको सेतरे ऐड करथिले तांको कॉन्स्टिट्यूशन रे केबे करथिले 1937 किंतु एटा तांकर निजर ओरिजिन नथिला से कोटू नेथिले देखो से नेथिला हमर स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्पेनिश रो किए नेले आयरिश रो किए आनला हमें इंडियन। ओके सोर्स टा कोटा देले हमरा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जोटा 1937 रे से माने तयारी करथिले। हां वेलफेयर नेचर पे बढ़िया आ सेटा से माने कोड नेथिले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ताले देखिबा ए डीपीएसपी को नै की किए कोन कहउछ। फर्स्ट बी.आर. अंबेडकर कोन कहउछ देखो से डीपीएसपी एच नोवेल फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोन नोवेल फ्यूचर। देखो प्राय ए स्टेटमेंट गुडा को पचारे एग्जाम रे आ आजी जहा किछि भी एमसीक्यू अछि सब ऑलरेडी एसएससी सीजीएल किबा ओडिशा स्टेट एग्जाम रे ऑलरेडी आसछि हैला। देखो किए कहउछन एटा बी.आर. अंबेडकर ता बाहरे सबटु गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखो डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट याकू कोन कहबा देखो फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोडे सेटा डीपीएसपी आउ फंडामेंटल राइट। हाँ नोबेल फ्यूचर की कहते बी.आर. अंबेडकर एटा मन रख। नेक्स्ट होची फर्स्ट जोटा आर्टिकल 37 सेतरे कोन मेंशन कराई देखो दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सेल्फ विद द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द मेकिंग ऑफ लॉ। एटा एम्पावर करछि कहा को स्टेट को। ओके जो लॉ टा से बनौछि पीपल सेंट्रिक लॉ बनेबा पई ए आर्टिकल टा स्पेशली हमर गवर्नमेंट को एम्पावर करछि ओके हैला। तापर देखो ये कौन इंप्लाई करछि डीपीएसपी देखो डीपीएसपी एम्बॉडी वेलफेयर स्टेट नॉट पुलिस स्टेट। देखो पिला रिसेंटली हम देखि जे बांग्लादेश रो स्थिति कोन अछि नेपाल रो स्थिति कोन अछि श्रीलंका हैला फ्रांस हैला। ओके सबुना सबुठारे कोन होइछि हम नॉर्मली आर्मी रे टेक ओवर करछि तांकर गवर्नमेंट को। ओके किंतु एठी कोन ए डीपीएसपी कहउछि गोटे वेलफेयर स्टेट हेबा कथा ना कि गोटे पुलिस स्टेट गोटे डेमोक्रेटिक स्टेट हेबा कथा। तापरे सबुटु मेन पॉइंट एटा प्राय एग्जाम पछरे ग्रानविले ऑस्टिन ये गोटे अमेरिकन लॉ स्कॉलर ये कोन करथिले जेतले हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाइथिला से आसी कि एठी के आस्थिले एटा स्टडी करिया पई ए कॉन्स्टिट्यूशन रे स्पेशली अमेरिकन टू कोन पई अलगा आ कोन स्पेशल अछि एथि। देखो ये कोन कहिथिले देखो ग्रानविले ऑस्टिन डीपीएसपी प्लस एफआर कोन एटा कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहिथिले ए दुईटा मिसे कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे कॉन्साइंस तैयारी करछन्ते हैला। तापरे आ गोटे सबटु मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस जोटा सुप्रीम कोर्ट रे छि कोन मिनर्वा मिल केस 1980 रे कोन हिछि देखैथे हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ए दुईटा भितरे हमर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ फंडामेंटल राइट या भीतर हार्मनी रहबाटा बहुत जरूरी काहे कि ना एटा होची हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक फ्यूचर टा। ओके नेक्स्ट
आउ कौन देख सबुठु मेन पॉइंट बीआर राव कही बीआर राव किए आमर कॉन्स्टिट्यूशन रा एडवाइजर से कौन कही देख रेकमेंडेड दैट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी जेमती जस्टिसेबल आउ नॉन जस्टिसेबल आमे ऑलरेडी पढ़ीथिला फंडामेंटल राइट ओके सेटा जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल सेटा भी हैला देखो से कौन कहले ना आमर ह्यूमन कर जहां भी आमर राइट अछि प्रत्येक इंडिविजुअल दुईटा टाइप राइट हेबा त कोन गोटे जस्टिसेबल आ गोटे अछि नॉन जस्टिसेबल किए कहिथिले एटा सीआर बीएन राव जे जेंति आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ओके व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी तार चेयरमैन किए थिले आंबेडकर आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी तार चेयरमैन किए थिले आंबेडकर से ताकू कोन कहिथिले एक्सेप्ट करने थे हां से कहले कि ना दुईटा टाइप रे आमर कोन राइट रहबा कथा गोटे होची जस्टिसेबल राइट आ गोटे होची नॉन जस्टिसेबल राइट ए टाइप पचारे ए जो जस्टिसेबल राइट और नॉन जस्टिसेबल राइट सेटा किए कहिथिले सेटा हमर बीएन राव बेले बेले गोटे गोटे जगह याकू आर ए ओ राव भी लिखाई छला नेक्स्ट होची देखो एटा कोन रिजेंबल करे देखो हमर जो गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेथिरे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेटा एग्जैक्ट होची हमर डीपीएसपी ओके हम सेटा सेथरु कॉपी करछे ता बारे आ कोन अछि देखो कोर्ट को देखो एटा तो वाला गवर्नमेंट पार्ट ये गवर्नमेंट को एम्पावर करछे किछि लॉ पीपल सेंट्रिक लॉ बनिया पई एबे कोर्ट को कोन पई से एम्पावर करछी कोन एम्पावर करछी देखो डीपीएसपी हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ जदी गवर्नमेंट किछि लॉ आनुची ताहेले से लॉटा वैलिड हबो ना इनवैलिड हबो सेटा की डिसाइड करछि देखो डीपीएसपी ये हेल्प करछि कोर्ट को काहा को सुप्रीम कोर्ट आउ हाई कोर्ट को ताले देखिलो डीपीएसपी रा पावर कोन ओके एबे देखो गोटे चार्ट थ्रो कह दउ छला देखो पार्ट 4 रे अछि आउ कोन आर्टिकल 36 टू 51 कोड होना हिची आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 ओके बीआर आंबेडकर कोन कहले नोवेल फीचर ग्रांडविले ऑस्टिन कोन कहले कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ता बाद देखो डीपीएसपी को तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराइछि कोन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तीनटा पार्ट एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा प्राय एग्जाम रे पचारे को आर्टिकल सोशलिस्टिक जाउची कोटा गांधीयन प्रिंसिपल जाउची आ कोटा लिबरल इंटेलेक्चुअल रे जाउची अच्छा पिला में टिके जणैबो एटा क्लियरली आछे ना नहीं क्लियर देखा जाउची यस और नो के जणे देखो सोशलिस्टिक कोन जाउछ देखो 38 39 39A 41 42 43 43A आउ 47 एटा भी देखिबा को टाइम रे ऐड हेची हमर डीपीएसपी रे नेक्स्ट होची देखो गांधीयन प्रिंसिपल कोटे जाउछ देखो इतरे 40 43 46 47 आउ 48 टोटल 5टा आर्टिकल नेक्स्ट होची लिबरल इंटेलेक्चुअल को आर्टिकल जाउची 44 45 48 48A 49 50 आउ 51 एति की जाउची हमर कोठी लिबरल इंटेलेक्चुअली एति की मन रखिबो को आर्टिकल को प्रिंसिपल रे जाउची एबे नेक्स्ट एबे देखिबा देखो ओरिजिनली कोन थिला डीपीएसपी आ सेथिरे पोरे कोन ऐड हेची देखो पोरे कोन ऐड हेची देखो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 रे को आर्टिकल देखो आर्टिकल 39F 39A 43A आउ 48A एटा पोरे ऐड हेची केबे 1976 रे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे कोटा ऐड हला 38 टूटा ओके ता बारे 82nd रे कोन हला देखो हमरो आर्टिकल 45 रे चेंजेस कराला कोन चेंजेस कराई देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they attain एज ऑफ 6 इयर्स ओके देखो एथिरे अपर एज लिमिट लिखाई नी 6 वर्ष पर्यंत लिखाई छला तापरे 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 एथिरे कोन आछि आर्टिकल 43 ऐड कराला से कोन कहूची कोऑपरेटिव्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटा परे ऐड कराला एबे जिबा क्वेश्चन को एबे रेडी हे जाओ एबे आसिला हमर दुआदार सेशन टा ओके दुआदार सेशन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कोटा कंट्री को गवर्न करिया पई फंडामेंटल ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन सी डीपीएसपी एंड ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज शीघ्र शीघ्र आंसर जण दियो कोटा
फंडामेंटल गोटे कंट्री को गवर्न करिया पाई स्टडी एलोन बढ़िया जन को आंसर आसला बाकी कुआडे गले को कोउटा फंडामेंटल हमरो गवर्नेंस पाई गोटे कंट्री रो गवर्नेंस पाई फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी बढ़िया सेटा होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी काहे कि ना ये स्टेट को एम्पावर करछि किछि पीपल सेंट्रिक लॉ बनेवा पई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 the articles of the constitution of india which deal with directive principle of state policy देखो कोन पचाछि डीपीएसपी को आर्टिकल कवर करछि ऑप्शन ए 26 to 41 ऑप्शन बी 30 to 45 ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 51 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 40 to 55 शीघ्र से जने दियो आर्टिकल को आर्टिकल कवर करछि डीपीएसपी को आर्टिकल कवर करछि एबे रिसेंटली देखितिला बढ़िया पार्ट 4 रे जाउछ ना पार्ट 4 आउ कोन 36 to 51 बढ़िया आर्टिकल 36 to 51 विश्व सेड वेलकम टू द क्लास बढ़िया प्राय पिलांगर आंसर ठीक अछि नेक्स्ट The purpose of the inclusion of DPSP in the Indian Constitution is to establish कौन establish करबा पई DPSP को हमर Indian Constitution ऐड कराई छी ऑप्शन ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑप्शन बी सोशल डेमोक्रेसी ऑप्शन सी गांधीयन डेमोक्रेसी एंड ऑप्शन डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एटा बेसिक जिंसटा कौन पई डीपीएसपी को हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड कराई छी ओके पूजा बेर सी आसिला स्टडी एलोन सी आसिला अरे बाबा रे देखो डीपीएसपी को तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी नो डाउट किंतु कोनसी जगह रे लिखाई छी हमें गांधीयन प्रिंसिपल ही हमें एस्टैब्लिश करबा लिबरल करबानी किबा सोशल किबा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करबानी बोली कोठी लिखाई छी हमें एबे देखिला परा टोटल तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी को टाइप रो प्रिंसिपल अछि ओके आंसर होची गोटे सेटा होची सोशल एंड डेमोक्रेटिक सॉरी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ओके सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सब बड़े एटा बुझियो हैला गांधीयन नो कि लिबरल नो जदि दुईटा मिसी के हेतंता ताहले ओके ना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हेबनी सेटा होची सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देखो डीपीएसपी कोन पई लोकंकर वेलफेयर पई ऑब्वियसली हैला सेति पई एई पॉइंटटा होची अरे आंसर गुडा को डिलीट करनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो पिला माने गोटे इंसो ए जो फर्स्ट जो पढेली डीपीएससी रो किछि थ्योरीटा सब क्लास रे किछि किछि नुवा नुवा एमते किछि नै कि आसीबा जदी तमे किछि अन्य किछि चाहूचो ताले एटी कमेंट सेक्शन लिखि दियो अन्य किछि करिवाल कि आउ किछि एमसीक्यू पढिबा सेटा ओमिट कर देबा ओके थ्योरी ओमिट करी कि आउ किछि एमसीक्यू आनिबा ना से थ्योरी रहले चलिबो को शीघ्र जणे दियो के जणे दियो थ्योरी रखिबा ना से ता बदल रे आउ किछि एमसीक्यू ऐड करिबा ओके आज बहुत गरम होची सेति पई पिला गुडा को सोई जायछंती ओके क्वेश्चन नंबर 4 द एनफोर्समेंट ऑफ DPSP depends mostly on अच्छा ए जो DPSP जोटा हमें एनफोर्स करछु कहा ऊपर डिपेंड करछि ऑप्शन ए द कोर्ट्स ऑप्शन बी एन इफेक्टिव ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट ऑप्शन सी रिसोर्सेस अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी पब्लिक कोऑपरेशन अच्छा मिकिरा गोटे बढ़िया क्वेश्चन डाला सर एटा नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एनफोर्स केमिति हेबो ओके देखो एनफोर्स मीन तार भी क्राइटेरिया अछि हम किछि को एनफोर्स करि परबा डिपेंड सेति बने एटे क्वेश्चन अछि ए क्वेश्चन सल्ला परे जानि जिबा हला एनफोर्समेंट केमिति हेबा कोन पई हेबो सेति पई एटा नॉन एनफोर्सेबल खाली ए गोटे क्वेश्चन नि तार आंसर दे देबो हला आ आंसर होछि कोन
रिसोर्सेस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। ओके देखो डीपीएसपी रे जहां भी अछि आर्टिकल 36 टू 51 पर्यंत जहां किछि भी अछि से कोन स्टेट की गुटे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दउछि, फंडामेंटल राइट गुटे कोन नेगेटिव ऑब्लिगेशन दउछि एठी। ओके तो ये कोन करछि स्टेट को एम्पावर करछि किछि लॉ बनेवा पय, किंतु लॉ कहा ऊपर डिपेंड जे पर्यंत हम पाखरे रिसोर्सेस अछि पैसा अछि। ओके तो सेथि पय एटा नॉन जस्टिसेबल मिकी बुझियला एबे बुझियला कांसेप्ट क्लियर हला कोन पय नॉन जस्टिसेबल काहे कि ना पैसा थिले आमे एम्पावर कर सॉरी लॉ टा आनी परिबा। ओके जदि नाही ताहले आमे एनफोर्समेंट करी पारिबानी सेति पय एटा उडे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दोची स्टेट को। ओके हां नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हु डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोवेल फीचर किए कहितिले डीपीएसपी को शीघ्र शीघ्र जणे दियो एबे रिसेंटली हमें पढितिले नोवेल फ्यूचर डीपीएसपी को नोवेल फीचर किए कहितिले ऑप्शन ए डीडी वासु, ऑप्शन बी बीआर अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित नेहरू एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हाँ बीडी बैच रे मु क्लास करछि। ओके किछि कथा नाही सेतरे पढिबा बढ़िया सेटा होछि देखो दीटा ना दीटा दीटा नहीं तीनटा ना गोटे होछि बीआर अंबेडकर। ओके एतरे आंसर होछि के बीआर अंबेडकर। देखो तीनटा ना गोटे होछि बीआर अंबेडकर, सेकंड होछि ग्रांडविले ऑस्टिन, ओके थर्ड होछि कोन बीएन राव। हाँ आमे कोर्ट को जाई परिबानी सेति पय तो नॉन एनफोर्सेबल एनफोर्सेबल मतलब कोन मीनिंग कोन which can be enforced in the court of law। non enforceable means से कोर्ट रे भी हमें केस करि परिबानी किबा किछि करि परिबानी हला सेति पय। हाँ फंडामेंटल राइट जदि वायोलेट हला ताहले हमें कोर्ट को जाई परिबा काहे कि ना सेटा जस्टिसेबल इन नेचर। ओके कैन बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 which part of the Indian constitution refers to the responsibility double h दी थर रिपीट हेछि refers to the responsibility of the state towards international peace and security। अच्छा एबे को आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टटा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रे मेंशन कराइछि। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डीपीएसपी एंड ऑप्शन डी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बढ़िया पूजा मिकी दी जन को आंसर सी आसिला। देखो पिला माने जहां भी क्वेश्चन अछि मु नै कि आसी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आसी छै हला यार पार्ट 2 भी आसीबो जेमति डीपीएसपी आज पार्ट 1 नै गला यार अन्य पार्ट भी आसीबो जोटा एग्जाम रे केबे आसी नथिबो सेमति क्वेश्चन। ओके बढ़िया सेटा होची डीपीएसपी को आर्टिकल आसी नॉर्मली हमर आर्टिकल 51। बढ़िया की आंसर लेके जोटा पूजा राइट स्टडी अलोन। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 DPSP may be classified into which of the following parts for sake of convenience study। okay DPSP को convenience study पई केतेटा पार्ट डिवाइड कराइछि देखो ऑप्शन ए सोशलिस्ट, ऑप्शन बी गांधीयन, ऑप्शन सी लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एबे रिसेंटली कराइछि देखो से डायग्राम रे देखाइ दिला। बढ़िया दी जन को राइट आंसर तीन जन को राइट आंसर असला। बढ़िया सेटा होची ऑल ऑफ द अबव। देखो हमें पढितला एबे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बेची, गांधीयन प्रिंसिपल बेची आ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल बेची। एटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट। एइथिरे कोउथिरे को आर्टिकल जाउची सेति की मन रखिबा हला से जो डायग्राम टा दिया हेतिला ताकू गुटे कॉपी रे लिखि दबो। ओके तो एठी आंसर होची कोन ऑल ऑफ द अबव। बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट the instrument of instructions contained in the government of India in 1935 has been incorporated in the constitution of India in the year 1950। अच्छा जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थिला जोटा हमें कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन कला 1950 रे सेटा कोटा ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डीपीएसपी, ऑप्शन सी एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स एंड ऑप्शन डी कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू द conduct of business of the government of India। शीघ्र शीघ्र जणे दियो। बढ़िया
तीन जन को राइट आंसर आसला सेटा होची डीपीएसपी देखो 1935 रे कोन थिला इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके स्टेट कोन करिवो तार इंस्ट्रक्शन ओके कोन पॉजिटिव थिंग से करिवो कोन कोन लॉ आनी परिबो से सब जिंस गोटा हला कोठी थिला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखिबा हम जो बोर्ड फीचर जोटा पढितिला भी हला सेतरे देखितिला को सोर्स रो हमें कोन आनिथिला मोस्ट हम जिंस कोठो आनिथिला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ए भितरु कोउटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे जाउची ऑप्शन ए देखो एमिति क्या क्वेश्चन टा प्राय हमर सीजीएल आसी हला सीजीएल एग्जाम गुडा करे नेक्स्ट सर देखो ऑप्शन गुडा स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ and welfare of the people. Option B, equal justice and free legal aid. Option C, just and human conditions of work and maternity leave. Option D, all of the above. बढ़िया प्राय पिलांगर आंसर ठीक रहछि किशोर वेलकम टू द क्लास प्राय पिलांगर आंसर ठीक अछि सेटा अछि देखो हमरो सिक्योर सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन एटा भी अछि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एटा भी अछि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ एटा भी अछि ताले आंसर करो ऑल ऑफ द अबव बढ़िया देखो प्राय क्वेश्चन गुडा कंफ्यूजिंग लागि जे पन हम प्रैक्टिस न करछु सेते पई मैक्सिमम हम प्रैक्टिस करबा अच्छा तम भीतर किए एसआई एग्जाम दौच किए आरआई एग्जाम दौच टे कमेंट जणे देल आरआई और एसआई एग्जाम किए दौच शीघ्र जनाओ कहीं ना एते दिन पर पुणी आउ थे एग्जाम हे जोटा थोड़े कैंसल है आरआई और एसआई एग्जाम किए दौच ओके 10 which of the following not देखो एटरे कोन अछि not ओके not एटा सबले मन रखिबो जोटा इनकरेक्ट किंबा not सेटा आगो देखिबो हला not the objective of directive principle of state policy option A to establish a welfare state option B to ensure socio economic welfare option C to promote international peace and security option D to establish a religious state okay study alone आरआई एग्जाम दोचो ताले बहुत बढ़िया ऑल द बेस्ट जहा किसी हमर पढ़ा होची जानि त पोल्ट्री रो मैक्सिमम ट्राई करछि जहा कि तमरो पोल्ट्री रो एग्जाम आसीबो ओके क्वेश्चन आसीबो मैक्सिमम एथिरु ही आसु ताले आंसर कोन देखो एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट एटा तार फ्यूचर टा हैला टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर एटा मी देखिजु एटा भी तार फ्यूचर टा आउ कोन टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एटा भी डीपीएसपी रो फ्यूचर किंतु रिलीजियस स्टेट एटा तार फ्यूचर नो ताले आंसर कोन ऑप्शन डी बढ़िया काहे कि ना इंडिया गोटे सेक्युलर स्टेट बढ़िया नेक्स्ट 11 which of the following can be amended by a special majority एटा बढ़िया स्पेशल क्वेश्चन एटा सीजीएल 2019 रे एटा सरची ओके ए भीतर कोटा स्पेशल मेजोरिटी रे एमेंड हेई पारिबो ऑप्शन ए डीपीएसपी ऑप्शन बी रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट ऑप्शन सी एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑप्शन डी यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट शीघ्र शीघ्र को मे बी नेटवर्क पई टिके बफर हेई पारे ओके हां सेटा होची डीपीएसपी ओके डीपीएसपी को जदी एमेंड करबा अछि ताले को टाइप रो मेजॉरिटी दरकार हमरा स्पेशल मेजॉरिटी आ बाकी सब नॉर्मली एटा सिंपल मेजॉरिटी ओके सिंपल मेजॉरिटी बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन कोठी मेंशन कराई छी आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट सेट अच्छा तमरो स्पीड टाकू 1x रे रखो हैला 1x रखो देखो जो हमारा वेलफेयर स्टेट रो आइडिया टा सेटा कोथरे एनसाइन कराई छी कॉन्स्टिट्यूशन रे देखो ऑप्शन ए प्रीएम्बल ऑप्शन बी डीपीएसपी ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स एंड ऑप्शन डी 7th शेड्यूल बढ़िया मिकी स्टडी अलोन ए दीटांकर आंसर आछे बाकी सब कुआडे गले चुपचाप बसचंती
पिला माने वीडियो को टिके भी लाइक कर दियो, लाइक टा आज बहुत कम अछि। बनिता प्रधान वेलकम टू द क्लास। हाँ आज आमर सब डीपीएसपी। अच्छा रुह एटा टॉपिक वाइज जानूची सेति पई सब जाक डीपीएसपी ताले एनिकी मिक्स्ड क्वेश्चन आनिबी। ओके आउ किछि टाइम पर पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन आनिबा, पूरा मिक्सचर बने के आनिबा खिचड़ी कर देबा। ताले आंसर कोन एटी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कोन करछि एथिरे हमर आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट टा मेंशन अछि। नेक्स्ट the directive principle of state policy are in the nature of तार nature कौन को ऑप्शन ए judicial injunction to government to enact certain law, option B request to government to pay attention to certain subjects, option C injunction to the government to refrain from doing certain thing, and option D instruction to the government to do certain thing। को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर टा कोन एटा ट्रिकी क्वेश्चन टा एटा ऑलरेडी सीजीएल एग्जाम रे ऑलरेडी आसेछि, सेंट्रल सीजीएल एग्जाम रे एटा ऑलरेडी आसेछि। हां एनी की मिक्स्ड क्वेश्चन किछि आनिबा हला काहे कि ना देखो तब माने निजे कहितिलु मागुर कहितिली सब पिला समान कैटेगरी रो ना दियाला केई पढ नथिबे पॉलिटिक्स सेति पई कोन होछि ना एठी मु किछि किछि टॉपिक वाइज क्वेश्चन नै कि आसी। ओके सेति पई ओरिडा बन नै किछि टाइम टॉपिक वाइज करबा तापरे पुणी गला दी तीनटा क्लास कला पुणी किछि मिक्स क्वेश्चन आनिबा। ओके को शीघ्र को तार नेचर कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर कोन। ओके पूजार सी आसिला मिकी रो तो पूरा ऑप्शन आसिला ए एग्जाम रे तमे गोल बुले पारिबने हला किबा जो हमरो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रे गोटे ही ऑप्शन मिकी गोटे ऑप्शन सिलेक्ट करो सी किंबा डी हेबन सेमती हेबनी। अच्छा देखो डीपीएसपी कोन कहूची स्टेट को एम्पावर करछि किछि जिंस करिवा पाई मु मूलर ए गोटे सेंटेंस कहछि से कोन एम्पावर करछि किछि करिवा पाई से रिफ्रेन करूनी हला सेते पई पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दोउची पूरा स्टेट ऊपर। ताले आंसर कोन होबो एबे को से इंस्ट्रक्ट करछि बा ताले आंसर कोन इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग। ओके किछि करिया पई स्टेट को से प्रोत्साहित करछि लोकन को पई ताले आंसर डी। ओके आज गोटे जनकर भी आंसर नाही ताले आंसर होछि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 which one of the following directive principle was inserted by the constitution 42nd amendment act 1976 ए भितरु कोउटा 1976 42nd amendment act रे ऐड कराइछि। ओके ऑप्शन ए the state shall minimize inequalities in income, option B equal justice and free legal aid, option C promotion of cooperative societies, and option D provision for early childhood care। को शीघ्र शीघ्र को ओके जनकर आंसर बी आसिला दी जनकर बी आसिला बढ़िया सेटा होची देखो ऑलरेडी मु देखैतिली जोटा परे ऐड हेतिला। ओके तो एथि आंसर कोन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ओके ताले ऑप्शन बी टा हां कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट एक्ट बढ़िया बनिता राइट आंसर। देखो किछि एक्सप्लेनेशन मु देखे दोछि कोउटा कोथिरे ऐड हेतिला देखो स्टेट सेल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम सेटा कोथिरे ऐड हेतिला हमरो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे। ओके सेटा 42nd रे हेइनी सेटा 44th रे हेइछि। ओके तापर देखो promotion of cooperative society सेटा कोठी हेतिला 97th amendment act 2011 रे। ओके ता बारे देखो ऑप्शन डी रे थिला कोन प्रोविजन ऑफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एटा कोथि रे हेतिला हमरो 86th amendment act 2002। पिला माने ए जहा किछि भी मु एठी एक्सप्लेनेशन देछि एटा प्लीज रफ रे टिके लिखिना हला निजे कॉपी रे लिखिनबो। ओके बुझियला बे कोन पय ऑप्शन बी देखो खाली ए गोटे एटा आस्तिला हमर कोन 42nd amendment act 1976 रे बढ़िया हां आर्टिकल 45 ऑप्शन डी रे जोटा। नेक्स्ट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर देखो ए जो पीआरआई
पचार सिस्टम सेटा कोठी लिखा है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन एक्ट। ओके शीघ्र शीघ्र जणे दियो कोउथिरे मेंशन कराई छी पंचायती राज सिस्टम टा? बढ़िया दी जन तीन जन को राइट आंसर आसला सेटा होची डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। को आर्टिकल रे को आर्टिकल एबे आर्टिकल टा कहि दियो बढ़िया पूजा राइट सेटा होची आर्टिकल 40 कोन लिखाई छी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 a socialistic ideology is reflected in directive principle of state policy which calls for okay ये जो हमर जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी जोटा लिखा है हमर डीपीएसपी रे सेतिर भितर कोटा एटा ऑप्शन ए securing equitable distribution of material resources of the country to prevent concentration of wealth, option B promotion of cotton industries, option C free and compulsory education for children up to 14 years of age, and option D all of the above। शीघ्र शीघ्र जणी दियो ए भीतर कोटा सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी? बढ़िया ए मेकी सेटा बी हेबनी बी टा भी हमर सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी रे जाउछ हैला सेति भाई आंसर कोन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ओके देखो सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एटा भी आसी सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी काइना सोशलिस्ट रो मीनिंग कोन हमर प्रॉपर्टी टा किबा संपत्ति टा गोटे जन को पाखरे न रहबा कथा समस्त पाखरे इक्विटेबल रहबा कथा सेति भाई सोशलिस्टिक जो सोशलिज्म जोटा से कोन कहउची हमर इगलिटेरियन सोसाइटी इगलिटेरियन सोसाइटी ता ऊपर से बिलीव करे माने समभावापन्न सोसाइटी समस्त पाखरे समान प्रॉपर्टी रे वाला प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री एटा भी जाउची फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एटा भी जाउची हमर सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी ताले आंसर कोन ऑप्शन डी। चाइल्ड राइट एक्ट देखो सेथिरे नॉर्मली हमर 6 वर्ष लेखा हैला किंतु परे ताको बडा कि 14 वर्ष कहला 6 टू 14 वर्ष पर्यंत हैला फंडामेंटल ड्यूटी रे सेटा रखा है हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ए भीतरु कोटा 42nd अमेंडमेंट रे ऐड कराई छी? ऑप्शन ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द बोथ मेन एंड वुमेन, option B participation of workers in the management of industries, option C right to work education and public assistance, and option D securing living wage and human conditions of work to workers। शीघ्र शीघ्र जणे दियो कोउटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कराई छी एबे रिसेंटली पढि जेटा एटे जानिछो जस्ट रिसेंटली एबे जस्ट कलाइडा ऑप्शन ए रे कोन अछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखो जेते बेले हमरो ब्रिटिश थिले ब्रिटिश टाइम रे कोन होतिला नॉर्मली लोकन को पई अलगा टाइम टेबल थिला हैला आ फीमेल को पई अलगा थिला लोक माने नॉर्मली हमरो 12 14 घंटा काम करथिले फीमेल को पई 18 10 घंटा सेते पई तांकर वेजेस टा भी डिफरेंट थिला किंतु परे कोन होला डीपीएसपी रे सेटा ऐड करला ना गोटे टाइम टा जेहेतु समान समान काम करा जिवो सेहेतु दरमा टा भी समान रहइबो। ओके और प्रीवियस क्वेश्चन रुआ करियो एबे को आगो इटा ना ऑप्शन डी एबनी रे सेटा होची ऑप्शन सी राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ओके राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस एटा हमरो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड कराई छ। देखो एथिरे आ कोन ऐड कराई छ देखो नॉर्मली 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कोन आ ऐड करछि देखो आर्टिकल 39 रे कोन एटा फ्री लीगल एड। ओके आ कोन ऐड करछि देखो
नॉर्मली आर्टिकल 43A कौन एटा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आउ कौन आर्टिकल 48A कौन एटा प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ओके आउ लास्ट रे कौन प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एतिकी से ऐड करछि कोटी हमरो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ओके सोनालिस भाई वेलकम टू द क्लास नेक्स्ट आर्टिकल 40 of the Constitution of India advises the state of work for से आर्टिकल 40 कौन मेंशन करछि को ऑप्शन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड ऑप्शन डी लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स शीघ्र शीघ्र जण दियो बढ़िया एटा रिसेंटली पढितला ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ओके कोथरे जाउची हमरा आर्टिकल 40 एबे रिसेंटली पढितला जोटा पंचायत जोटा बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आर्टिकल 46 देखो गोटे अखाड़ आर्टिकल टा आसी गला एटा प्राय पिला छाड़ी की जानती 46 47 48 पूजा भाई आज मोर बर्थडे ब्लेस कर दो ओके हैप्पी बर्थडे पूजा ओके प्रीवियस क्वेश्चन रॉन्ग है देखो कोटा मु देखे 17 ना 16 बोधे 17 ना मिकी 17 ओके से मैडम निज गायब बोले नेक्स्ट 19 अच्छा आर्टिकल 47 46 of the constitution of India refers to the promotion of educational and economic interest of कहार इकोनॉमिक इंटरेस्ट को से प्रमोट करे आर्टिकल 46 ऑप्शन ए रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑप्शन बी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑप्शन सी डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम लार्जर रीजन so large irrigation project and option D the economic deprived को शीघ्र शीघ्र को आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहार एजुकेशन को से प्रमोट करे कुआ शीघ्र कुआ आर्टिकल 46 अच्छा एटा सरुआ तापर सेठी जिबा आर्टिकल 70 हां बढ़िया सेटा होची शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आउ अदर वीकर सेक्शन ओके कोथे जाउची आर्टिकल 46 ओके देखो हमर जो एजुकेशन जो रिजर्वेशन रहउची ना पढ़िया पई जोटा या पई एतिक सीट रिजर्व होची ता पई सेतिक सीट रिजर्व होची को आर्टिकल बेसिस रे होची एटा होची आर्टिकल 46 ओके पूजार बर्थडे ना आज खाली थैंक यू कहि देले हबनी मिठाटा भी देबा पड़िबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज और वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट लेटर डेट देखो जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशन लागू होइतिला ए भितर कोटा से टाइम रे हमरा डीपीएसपी रे ऐड हेइ नथिला से जोटा परे ऐड हेइची कोटा ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ऑप्शन बी प्रोहिबिशन ऑफ क्लाउड स्लॉटर ऑप्शन सी फ्री लीगल एड एंड ऑप्शन डी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोटा परे ऐड हेइची ओरिजिनली सेटा नथिला गोटे लेटर परे एडे चला को ओके बनिता प्रधान जनकर आंसर आसिला सी ओके मिकी रे थरे मेसेज टा डिलीट हला परे सी आसिला को पूजा रे भी सी आसिला स्टडी एलन सी बढ़िया सेटा होची फ्री लीगल एड एटा परे एडे छि एबे देखिबा कोटा ओरिजिनल थिला आ कोटा लेटर एडे छि देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जोटा आर्टिकल 40 रे आउसी एटा ओरिजिनली 1950 रे जो क्वेश्चन लागु हेतला सेतरे थिला हला
प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर जोटा आर्टिकल 48 रे अछि सेटा हमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थिला। ओके फ्री लीगल एड जोटा आर्टिकल 39 ए रे आसी सेटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पर एड हला बाकी ऊपर दीटा सेटा ओरिजिनल थिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा आर्टिकल 44 रे आउसी सेटा भी ओरिजिनली हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन थिला। अच्छा गोटे जिंस कहलो ए जहा किछि एठिरे जो लेखा गुडा को आसी ब्लैक किंबा ए जो रेड रे भलो से देखा होछि ना नहीं कहीं ना मते स्क्रीन रे टिके हेजी देखा होछि टी जणेलो केई जणे देखिलो केई जणे कहलो एटा ठीक से देखा होछि ना नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। In India, separation of judiciary from executive is enjoined by DPSP under article अच्छा ए जो separation of judiciary from executive एटा DPSP रे को आर्टिकल रे अंडर आसी ऑप्शन ए आर्टिकल 41 ऑप्शन बी आर्टिकल 43A ऑप्शन सी आर्टिकल 50 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 51 शीघ्र शीघ्र जानि दियो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एटा प्राय एग्जाम रे पचारे ओके दी जण कर पिला दीटा आंसर करले फास्ट तड़तर है कि आंसर करनी है बनिता आंसर 51 नो सेटा होची 50 आर्टिकल 50 ओके आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नील ऑस्ट्रेलिया दास वेलकम टू द क्लास। हाँ 51 टा कोन पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट which one of the following article of the DPSP deals with the promotion of international peace and security आसीगला सेही क्वेश्चन टा जस्ट आसीगला को एबे एटा को आर्टिकल ले जाउची दीटा जाको टिके समान समान पाखा पाखी आर्टिकल ना सेति पई पिला गुडा टिके कंफ्यूज हो जानती को प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को आर्टिकल ले जाउची आर्टिकल 36 43 48 और 51 कोदरे बढ़िया सेटा होची आर्टिकल 51 देखो नॉर्मली हमरो एग्जाम रे प्राय पचारेटा 50 और 51 टा ए दुईटा मन रखो स्पेशली। सेवती गुड आफ्टरनून वेलकम टू द क्लास। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द डीपीएसपी एंश्योर से कौन एंश्योर करे देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राय हमें न्यूज रे भी देखुछु ये हमरो कंट्री पई कौन एंश्योर करे ओके ताको कौन पई रखाई छी तार काम कोन ऑप्शन ए इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटी ऑप्शन सी नेशनल इंटीग्रेशन एंड ऑप्शन डी सपोर्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एटा जानिछो ऑलरेडी हमें एटा कर सारछि ओके मिकी आंसर टा भूल अछि एबे 23 जो डी कहउछ ना डी टा रॉन्ग आंसर यूनिफॉर्म सिविल कोड परा यूनिफॉर्म सिविल कोड समस्तन पई समान लॉ कोन पई तार काम कोन आर्टिकल 44 रे आसी आर्टिकल 44 ओके को डी एबनी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड रो गोटे ही मोटो सेटा होची नेशनल इंटीग्रेशन ओके सब बेले मन रखिबो समस्तन पई समान लॉ एतरे कोन हो गोटे नेशनल यूनिटी रहइबो नेशनल इंटीग्रेशन रहइबो ओके ताले आंसर कोन आंसर होची सी ओके एटा मन रहइबो आंसर सी को आर्टिकल आसी आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 which article of the constitution enjoins the state to provide a social order in which justice social economic and political freedom is ensured okay ए भीतर को आर्टिकल constitution को हमरा empower कोछि हमरा justice social economic and political freedom देवा पई ऑप्शन ए
Article 37, option B Article 38, option C Article 39 and option D Article 39A. এইটা বড়িয়া কোশ্চেনটা, এইটা অলরেডি भी CGL রে আসছে। ओके मिकी सोनाली दी जण आंसर देले, दी जणकर आंसर भूल अछि। ओके देखो दी जण आंसर देले 37 और 39 देले, मु दीटा जगह काटी दउछि हला, जण 39 ए देले ना, बस एटा मु काटी दउछि। एबे को बढ़िया क्वेश्चन एटा। हाउ आंसर होछि आर्टिकल 38। ओके आर्टिकल 38 ये एम्पावर को से हमर कॉन्स्टिट्यूशन को कोन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम को एंश्योर करिया पई। बढ़िया स्टडी अलोन पूजा बढ़िया। नेक्स्ट 25 which article of the constitution of India has provision of participation of workers in management of industry। हमर इंडस्ट्री रे मैनेजमेंट रे हमर वर्कर कर पार्टिसिपेशन सेटा को आर्टिकल रे मेंशन कराई छी। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 47 को शीघ्र शीघ्र को मोटी हटी जाउची, आराम से तुम देखि दियो हैला, सेति पे आज टिके साइड मु छिडा होची। ओके पूजा 43 हेबनी, 43 हेबनी, सोनाली 43 हेबनी, सेटा होची आर्टिकल 43A। ओके एक्चुअली आर्टिकल 43A कहूछु हमें, एटा आर्टिकल 43 क्लॉज A। ओके आंसर होची आर्टिकल 43 क्लॉज A। बढ़िया। नेक्स्ट 26 which one of the following is not correctly matched। देखो जदी नॉट देछि सेटा सेही क्वेश्चन टा को टिके भलो से पढो हैला, भल से पढो। नॉट किंबा इनकरेक्ट सेटा को नॉट करेक्टली मैच्ड ए भीतर कोटा करेक्टली मैच होनी। ऑप्शन ए आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑप्शन बी आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑप्शन सी आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन डी आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एटा देखि के जानि परतो कोटा भूल अछि। बढ़िया प्राय पिलांग आंसर ठीक अछि, सेटा कोन आंसर होछि ऑप्शन डी। देखो एटा 48 हेबनी, एटा कोन हबो 50। अच्छा 48 रे कोन अछि नॉर्मली हमर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, सेटा अछि, सेटा कोठी अछि हमर आर्टिकल 48 रे। किंतु आर्टिकल 50 रे कोन अछि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ताले आंसर कोन ऑप्शन डी। बढ़िया हां एनिमल हस्बेंडरी आर्टिकल 48 रे। राकेश कुमार वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट 27 which constitutional amendment guaranteed a position of primacy to all the DPSP over fundamental right। देखो ए भीतरु को constitutional amendment act हमर DPSP को उडे सुपीरियर पावर दउची हमर फंडामेंटल राइट टू। ऑप्शन ए 24th amendment act 1971, ऑप्शन बी 25th amendment act 1971, ऑप्शन सी 36th amendment act 1975 and option D 42nd amendment act 1976 को राकेश कुमार सी ना सी हेबनी सेटा होची 42nd amendment act 1976। देखो ये कौन कहूची ये अमेंडमेंट कौन कहूची जेते बेले भी कोनसी क्लास अब डीपीएसपी आ एफआर को नेकी फंडामेंटल राइट को नेकी सब बेले डीपीएसपी टा अपर हैंड रहइबो। ओके अपर हैंड रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग the provision for the protection and improvement of environment and safeguarding of the forest and wildlife are found in the constitution। देखो हमरो environmental protection ए भीतर कोउथरे मेंशन करा हिची सेटा। ऑप्शन ए ओनली इन डीपीएसपी, ऑप्शन बी ओनली इन फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। शीघ्र शीघ्र जण दियो। 28 हमरो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किंबा इंप्रूवमेंट आउ
वाइल्ड लाइफ रो सेफगार्ड सेटा कोउथरे मेंशन करा हैछि को पार्ट रे देखो दीटा ही पचारछि गोटे जे डीपीएसपी गोटे जे फंडामेंटल राइट आउट होछि बोथ सिंपल जिंस आमे ऑलरेडी डीपीएसपी रे जिंसटा देखि सारिछि कोन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फंडामेंटल ड्यूटी रे भी गोटे ड्यूटी ऐड करा हैछि कोन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन सेति पई आंसर कोन सेटा होछि ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी देखो एमती या क्वेश्चन रे केबे भी कंफ्यूज होबनी हला देखो एबे देखि नबा को आर्टिकल आसी देखो नॉर्मली हमर कोथरे डीपीएसपी रे को आर्टिकल आसी आर्टिकल 48 ए टा मो कलर टा चेंज कर दिया हां आर्टिकल 48 ए कोन कहूची देखो इट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट द गवर्नमेंट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटा कोथरे आसी हमर डीपीएसपी रे डीपीएसपी आर्टिकल 48 ए रे ओके आओ आवर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल हमर कोटा 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जी रे सेतरे कोन कहूची देखो 51 ए जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ड्यूटी फॉर सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ओके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करबा सेटा भी गोटे ड्यूटी होची को आर्टिकल रे आर्टिकल 51 ए जी रे ओके सब क्लॉज जी रे बढ़िया 51 ए खाली लेखनी हला 51 ए खाली लेखनी तार सब आर्टिकल टा भी मेंशन करो सब बळे एग्जाम रे एटा ही पचारि दे खाली 51 ए पचारिबनी ए सब क्लॉज टा ही पचारिबो सेति पई एटा भी मन रख हला नेक्स्ट 29 consider the following statement about directive principle of state policy and find the correct answer ए भितरु कोउटा करेक्ट डीपीएसपी regarding कोउटा करेक्ट ऑप्शन ए while the fundamental rights restrain the government from doing certain thing the DPSP exhort the government to do certain thing okay कोन कहछि फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमर गवर्नमेंट को बाहर करछि किबा बैन करछि कि जिंस करिया पाई किंतु डीपीएसपी हमर गवर्नमेंट को कोन कहछि एनकरेज करछि कि जिंस करिया ऑप्शन ए सेटा कहछि ऑप्शन बी कोन कहछि देखा the DPSP are not enforceable in the courts and do not create any justiciable right in favor of individual okay third कोन कहछि देखा Supreme Court in Kesavananda Bharati case ruled that DPSP constitute the basic feature of constitution and cannot be changed by parliament. In option D, all of the above. Okay. Pujar right answer. Gote all asila. Okay. देखो simple जिस fundamental right कौन कोची देखो ऐसे कौन कोची गोटे word देख लिखा है देखो कौन एटा restraint देखो fundamental right DPSP ये स्टेट ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन दोची डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दोची काहे कि ना ये किछि काम करिया पई स्टेट को एनकरेज करछि किंतु ये किछि रेस्ट्रिक्ट करछि ताकू सेति पई फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन करछि ताले एटा ठीक अछि डीपीएसपी कोन करछि एक्सहॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग से कोन किछि करिया पई गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करछि सेति पई हमर ऑप्शन ए टा ठीक अछि यदि ऑप्शन बी को जिबा डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट and do not create any justiciable right in favor of individual एटा ठीक अछि एबे पढितला हमें ओके ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस ruled that DPSP constitute the basic feature of constitution and cannot be changed by parliament ऑलरेडी हम जानि छी केशवानंद भारती केस 1973 ओके 24 अप्रैल 1973 कोन है चित्रे नॉर्मली हमर कहितले कि तमे सब पार्ट अमेंड करबो किंतु हमर बेसिक स्ट्रक्चर को तमे डिस्ट्रॉय करि पारिबो नाही ताले एटा भी ठीक अछि ताले आंसर कोन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट कार एटा ठीक अछि स्टडी अलोन पूजा दी जन को ठीक अछि हला बढ़िया नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एज ए रिजल्ट ऑफ मिनर्वा मिल केस 1980 ए लॉ विल बी प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 31 सी इफ को ग्राउंड रे गोटे लॉ को प्रोटेक्ट करा जाय परिबो आर्टिकल 31 सी रे टू ए ट्रिकी क्वेश्चन एटा सीजीएलएस इट हैज बीन मेड टू इंप्लीमेंट द directives in article 31 39 b and c option b it has been made to implement any directive principle option c it conflicts with fundamental rights and option d none of the above शीघ्र जणे दियो ए भीतर कोटा ठीक अछि
ओके जनकर आंसर बी आसला बाकी कुआडे गले जन को ही बी आसी कौन कहूँ अरे बाबा रे ए बी सी स्टडी अलोन स्किप ट्रिकी क्वेश्चन टा सीजीएल एटा आसछि हला सीजीएल एग्जाम रे ऑलरेडी आसछि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन टा कौन पचाछि मिनर्वा मिल्किस 1980 रे ए भीतर को आर्टिकल टा हमर आर्टिकल 31 सी ताको प्रोटेक्ट करिवो काहा को प्रोटेक्ट करिवो ओके मिकी रो ए आसिला बढ़िया सेटा होची ऑप्शन ए जदी किछि लॉ हमें मेड करछु ओके किंबा कोन सी डायरेक्टिव टा हमें 39 बी किंबा सी रे हमें आणुछु ताले सी हमर फंडामेंटल राइट जोटा होची 31 सी ता अंडर ताको हमें प्रोटेक्ट करि पारिबा ओके ओके ताले आंसर होची कोन ऑप्शन ए कौन सी क्वेश्चन टा स्किप करनी किछि ना किछि आंसर दियो ओके नेक्स्ट देखो एक्सप्लेनेशन रे एथरे कोन होइतिला देखो मिनरल मिल्क केस डिलीवर्ड ऑन जुलाई 31 केबे होइतिला देखो केबे जजमेंट आस्तिला जुलाई 31 1980 ओके एटा एक लैंडमार्क जजमेंट थिला कोन होइतिला एथरे देखो सेक्शन 4 एंड 55 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओके कौन पाई देखो asserting that Indian constitution is founded on the balance between fundamental right that is part 3 and DPSP that is part 4 and that is balance is part of basic structure जेहेतु ए जो part 4 and 55 जोटा हमरो 42nd amendment act 1976 जोटा हमरो fundamental right of DPSP भीतर कोन डिस्प्यूट टा करथला आ सेटा हमरो बेसिक स्ट्रक्चर को हेम्पर करथला सेति पई एटा ताको हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेक्स्ट कौन होइछि देखो एथिरे सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा बिल स्ट्रक डाउन द अमेंडमेंट दैट अटेम्प्टेड टू गिव अनलिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव सुप्रीमेसी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट देखो इमरजेंसी प्रोविजन कौन होइतिला फंडामेंटल राइट को पूरा उड़ै दियतिला हला ओके आ डीपीएसपी को भी सेटा हेम्पर होइतिला सेति पई ये कौन करछि डीपीएसपी को से अपर पावर दोछि आउ कौन होइछि देखो normally judgment for the certified the doctrine of basic structure of constitution established in the Keswananda Bharati case stating that certain fundamental feature of constitution are beyond parliament power to amend देखो से कोन कहले केशवानंद भारती केस रे नॉर्मली से टाइम रे कोन कहितिले कि हां तमे किछि पार्ट तमे अमेंड करिवो जोटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेई नथिबो ओके तो एते कि थिला हमरो लास्ट क्वेश्चन डाटा एबे देखिबा हाँ मिकी रो क्वेश्चन नंबर 17 ओके 17 आउ थरे देखि देबा कोन होइछि एटा कोथरे प्रॉब्लम अछि हाँ the principle among the following was added to the DPSP by the 42nd amendment act obviously sir option C टा राइट आंसर अछि त एथरे प्रॉब्लम कोन अछि मो ऑलरेडी देखैतिली परा देखो हमर 42nd अमेंडमेंट 1976 रे कोन ऐड हेछि आर्टिकल 39 ए ऐड हैला 43 ए ऐड हैला ओके 48 ए ऐड हैला आ कोन प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एटा भी ऐड हेछि ओके तो एटा हमर लास्ट आज सल्ला क्लास टा जदी किछि डाउट अछि ताले पचारि दियो आ वीडियो को लाइक कर दियो शेयर कर दियो जे भी एग्जाम दो जदी किछि नुआ किछि जानिबार अछि किबा जदी ए जो क्लास रिलेटेड किछि भी डाउट अछि ताले एठी पचारि दियो किबा वीडियो सल्ला परे आउ थरे देखो कमेंट सेक्शन में जणै दियो कि कोन डाउट अछि हला पुनी नेक्स्ट क्लास से ताको हम डाउट टा क्लियर कर देबा थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।